A very good evening to everyone, and thank you very much for this very warm welcome which I have received right from entering the gates of this hotel by Mr. Kohli, with whom I have been associating for the past 3 months or so. I'm very grateful to the Ghaziabad Management Association today for having invited me for this function, and I'm really happy to be here. I must say that because I belong to Ghaziabad. And even though I did not spend much time living there, but I definitely associate myself with that city. In fact, we moved to my parents moved to Ghaziabad in the year 1996, the year that I made into the civil services. So I was able to spend barely 6 to 7 months in the city, and then I just moved to Andhra Pradesh cadre, and where I spent about 15 years of my service, and then of course the last 7 years in Delhi. So, but in the last 22 years that I have been in service, I have been visiting Ghaziabad regularly every year. I used to take leave and come home, spend about 2 weeks there, and then of course go back to my cadre. So for all practical purposes, I belong to Ghaziabad and that is where my home is. So I'm very happy to be associated with the Management Association. And I was just telling Mr. Kohli that the IMT old campus was just around the corner of my house. So when I was preparing for the civil services there, we used to see the students outside, and I used to think that just in case I don't make it to the civil services, I'll join IMT and do my MBA from there. And by the time I came back from my training in the IPS and returned to the city, I found that it had moved to a beautiful new campus, and it has acquired a reputation today that I'm very proud of. I'm very proud to be associated with this association. The topic that has been the focus of discussion today is very, very interesting and very, very relevant. I particularly find it so because of the work that I had done in my previous assignment as Director Cyber Diplomacy in the Ministry of External Affairs. As the head of the Cyber Diplomacy Division, we found that digitalization issues related to data are at the center of all discussions, all public policy discussions in the world. In the last 3 years of my posting in the Ministry of External Affairs, I had an opportunity to, is it okay if I speak completely in English, or should I be speaking? I can mix both. I'm comfortable in both. Hindi is my mother tongue and English is what I usually speak. So, yeah, I think I should do both. I should do both English and Hindi. During my last 3 years in the MEA, I visited about 30 to 35 countries, and I also had the opportunity to lead the Indian delegation at the United Nations on several occasions. I was also part of the ICT working group of the UN, of BRICS, of SCO, the Shanghai Cooperation Organization, and many other international fora and specialized groups which have been formed by you. And during these discussions on various digital issues, I had the opportunity to discuss data issues in a very big way. तो आप लोगों को बहुत ही ये जान के आश्चर्य तो नहीं होगा, लेकिन शायद आपको ये बताना उचित होगा कि जो डेटा पर डिस्कशन है या डिजिटलाइजेशन पर डिस्कशन इस समय वर्ल्ड में चल रहा है, वो बिल्कुल सेंटर ऑफ पब्लिक पॉलिसी डिस्कशन है. ऐसा वर्ल्ड में कोई मीटिंग ही नहीं हो रही है जहाँ पर डेटा पर या डिजिटलाइजेशन पर या पब्लिक पॉलिसी एंड डिजिटलाइजेशन पर ये डिस्कशन नहीं हो रहा है. इनफैक्ट जब भी हमारे प्राइम मिनिस्टर या विदेश मंत्री जब भी किसी भी मीटिंग में जाते हैं या कोई भी फॉरेन मिनिस्टर्स इंडिया में विजिट करते हैं, तो हम लोगों का जो साइबर डिप्लोमेसी डिवीज़न था, उसमें से एक स्टेटमेंट उनके स्टेटमेंट में, एक पैरा उनके स्टेटमेंट में ज़रूर इंक्लूड किया जाता था, क्योंकि डिजिटलाइजेशन और मेरा जो पुलिस से रिलेटेड दूसरा सब्जेक्ट है काउंटर टेररिज्म, जिसमें मैंने काफ़ी काम किया है. तो काउंटर टेररिज्म और डिजिटलाइजेशन दो ऐसे इश्यूज हैं जो बिल्कुल सेंटर में है वर्ल्ड डिस्कशंस में भी. तो आज का जो आपने ये टॉपिक चूज़ किया है बहुत ही रेलिवेंट है. नाउ व्हेन वी लुक एट द इकोनॉमी एज सच, we find that the way the digitalization is taking place, it is totally transforming the way the economies are working. It is changing the way
we interact with each other. आपने interpersonal relationships की बात की. Interpersonal relationships themselves have got transformed. Now we might have 600 friends on Facebook, लेकिन कभी कभी जब हम उनसे मिलते हैं अपने फेसबुक फ्रेंड से तो हम उन्हें पहचान नहीं पाते हैं, और ऐसा मेरे साथ अनफॉर्चुनेटली कल ही हुआ है. तो दिस इज़ वेरी फ्रेश ऑन माई माइंड. आई मेट समवन yesterday and the girl claimed that she is my Facebook friend, and I was very embarrassed because I could not recognize her. So that is how it is. The way the interpersonal relationships are changing in the digital world, the way people are interacting with each other. We are more comfortable talking to each other on the social media than we are comfortable talking face to face. We find that the people with whom we have long chats on, say WhatsApp, when we actually meet them face to face, तो हमको बातचीत करने में उनसे बहुत मुश्किल होती है. हम वो एक कनेक्शन लोगों से नहीं बना पाते हैं. Interpersonal relationships definitely are changing in the digital world. The way the businesses are being carried out on the digital platforms, that has also completely changed in this era. एक बहुत बड़ा डिस्कशन जो वर्ल्ड में हो रहा है और इंडिया में भी हो रहा है, वो ये है कि क्या जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, डिजिटल इकोनॉमीज़ हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, या फिर जितने भी नए डेटा ड्रिवन इकोनॉमीज़ हैं, क्या इनकी वजह से लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा? क्या बिजनेसेस चेंज होंगी? तो येस, it is changing, and it has already changed. Now Miss Oberoi, I was hearing her, she said that there will be no stable career paths for the people. So it's true. Now when we were having these discussions in the UN in Geneva, I remember somebody used the word called gig economy. So एक गिग इकोनॉमी इमर्ज हो रही है, एक नए टाइप के एम्प्लॉयमेंट और करियर पाथ से इमर्ज हो रहे हैं. फॉर एग्जांपल, आजकल लोग ज़्यादा सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट्स पर हैं, या फिर वो लोग ऑन कॉल एक्सपर्ट्स हैं. इस तरह के जो करियर्स हैं या इस तरह की जो जॉब्स हैं वो इमर्ज हो रही हैं, रादर देन एक सिविल सर्विसेज टाइप का करियर जिसमें आप एक कंपटीशन के थ्रू एंटर करते हैं, फिर आपका एक नोन ग्रोथ चार्ट है, आप ASP बनते हैं शुरू में. फॉर एग्जांपल एज एन IPS ऑफिसर एक ASP की तरह आप एंटर करते हैं सर्विस में, और DG की तरह रिटायर होते हैं. तो एक नोन करियर पाथ है. बट जो डिजिटल इकोनॉमी है उसमें करियर पाथ्स चेंज हो गए. पीपल आर चेंजिंग. आई मेट समबडी इन फिनलैंड वेरी रिसेंटली who actually was a civil engineer from Patiala, but today he is a data analytics engineer in Infosys, and which is a completely different field. तो लोगों का करियर कहाँ से कहाँ टर्न हो रहा है, लोग फील्ड्स जंप कर रहे हैं, करियर्स जंप कर रहे हैं. सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स में टर्न हो गए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स मैनेजमेंट में चले गए. आई मीन देयर आर नो फिक्स्ड करियर्स, एंड ऑल दैट इज द रिजल्ट ऑफ डिजिटलाइजेशन. So things are changing, and things are changing so fast that it is very difficult to take control of them. Now for example, OECD had carried out one study. उस स्टडी के हिसाब से जब टेलीफोन इन्वेंट हुआ था तो क्वार्टर ऑफ द अमेरिकन पॉपुलेशन took about 35 years to start using the telephone. It took about I think it about 7 years for the internet to be used by the quarter of the American population, and just about 3 years for the smartphones to be used by the entire American population. तो एक टेक्नोलॉजी को एक अडॉप्ट करने में 35 इयर्स लग रहे थे, और दूसरी टेक्नोलॉजी को आजकल की दुनिया में अडॉप्ट करने में सिर्फ 3 इयर्स लगते हैं. डिजिटल वर्ल्ड में इतना फास्ट एवोल्यूशन है कि मैंने देखा जब 3 इयर्स में मैं MEA में थी तो जो डिस्कशन हम फर्स्ट ईयर में कर रहे थे सेकेंड ईयर तक वो इरेलेवेंट हो गया था. जब तक हमने उसकी पॉलिसी बनाई, हमने इंडिया में बैठ के सोचा कि ठीक है ये सब्जेक्ट हमें UN में हम इस साल डिस्कस किया, अगले साल की मीटिंग की हमें अभी से तैयारी करनी चाहिए. इस साल हमने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया, वी हैड नॉट डन आवर होमवर्क, वी वर नॉट अवेयर ऑफ द इशूज. सो फॉर द नेक्स्ट मीटिंग लेट अस प्रिपेयर आवरसेल्व्स वेरी वेल. By the time the next year came, the conversation had changed, because the things had changed on the ground. The technology is evolving at such a pace. So
public policy in such circumstances is very, very relevant. Government का role यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा important है, particularly not only to manage what is happening on the ground, but also to manage the public perception of what is happening. For example, Mr. Amit Agarwal, Mr. Vinay Gupta mentioned that जो है हम लोग you mentioned about the artificial intelligence, that will it take over the human intelligence? Will there come a time that that the human intelligence will become less than the artificial intelligence? Now that is a perception. So equally important about managing the actual realities of the technology evolution is also the perception which is coming to it. Now this is a very, very popular perception. One, will artificial intelligence denigrate the human intelligence? And number two, will there be a loss of employment because of automation of industry? I will try to address both of these questions. The first is about the loss of employment. So if you see, अगर आप technically बहुत सारी इस subject पर studies हो चुकी हैं कि क्या artificial intelligence से या फिर automation of industries से, और ये तो industrial revolution के time से चल रही है debate, क्या employment कम होगा? Will the machines replace the humans? Yes, machines will replace the humans. But it will be a short-term phenomena. It is not going to be a long-term phenomena. For example, what will happen is the migration of labor from one sector to another. तो अभी जो काम, for example, एक बाजार में जो एक आपकी किराने की दुकान पर सामान मिलता था, उसकी जगह अब एक डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गया है. पीपल आर कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव. दे डोंट हैव द टाइम कि एक छोटे से लेटेस्ट से बाथरूम स्लीपर्स खरीदने के लिए मैं मार्केट जाऊं, उसके लिए आधा घंटा ट्रैफिक जैम में क्रॉस करके जाऊं और फिर वहां से एक सिर्फ 500 रुपए की चीज़ खरीदूं. आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ टाइम. सो आई मच प्रेफर इट दैट आई गो टू Amazon and order it and it is delivered on my home. So the kirana shop owner or the Bata showroom next to me feels very aggrieved कि आप तो सब चीज़ें घर पर ऐसे ही मंगवा लेती हैं, तो हमारे जैसे छोटे दुकानदारों का क्या होगा? तो it's true. The small sectors or the small businesses are getting very affected by the digitalization. But what will happen is the labor force will have to upskill itself. They will have to move. They will have to cross the sector. They will have to change the way the businesses are being operated. That is, the business models will change. The people will do the same thing, except that they will now just sit behind the computer and do online marketing. Marketing, instead of being door-to-door, somebody mentioned in the previous session, instead of being the door-to-door salesperson, the marketing is now online. And it is a very sophisticated kind of marketing, which means that requirement for labor is not getting reduced. It is the same. It's just the way the same work is being done that needs to be remodified, adapted, changed to the technology. So I think that is what it is. Another report which was, another study which was done by the European Union, उसमें भी उन लोगों ने इसको study किया, particularly in context of the Asian economies. And they also said the same thing, that the markets will have to adopt, adapt, diffuse the technology to take care of the labor problem. So labor issues are going to be very, very significant in the era of digitalization. And the role of the public policy will be basically to make sure that the skilling opportunities are available for the labor force. आपने mention किया था academic institutions में academic curricula को change करना पड़ेगा. Yes, we have to change the academic curricula, and it has to begin in school itself. For example, I have a small son. I think instead of thinking that I should send him for a painting class or a football class in the summer vacations, I should send him for typing classes. Because जब तक उसकी कंप्यूटर की टाइपिंग स्पीड ठीक नहीं होगी तब तक वो आगे कुछ नहीं कर पाएगा. Instead of trying and spending my time in improving his handwriting, I prefer to send him for computer typing classes so that he is ready for the future. So that is what. And adult learning. So many of us, people like me, when we started when joined the service 22 years back, internet ही नहीं था. 94 में we opened our first account on Hotmail. And today we are heading cyber diplomacy divisions in the Ministry of External Affairs. So unless each of us, as an individual, as an organization, as a country,
We have to completely work on reskilling ourselves, relearning things, upgrading our skills, and that is where the public policy will be very, very important. Providing that window of opportunity and providing that platform to the people of this country, to the labor of this country, so that they adapt themselves to the new models of the new kind of jobs which are available, so they don't get left out. Now this is what happened to the US labor market. जो वहाँ पर आजकल इतना migrants के against unrest हो रहा है, उसका यही reason है. इंडिया में IT professionals जो थे वो यहाँ से पढ़ के migrate कर गए US में, and they completely took over the jobs, the Silicon Valley. And the American economy, in its own arrogance or in its own world, they did not think of upgrading that skill, although it was already digitalized. So we were able to take over that market. So same thing, basically labor will have to reskill itself. Similarly, if you look at the structures and the processes, if I take a very small example from my own service, that is a police station. The way the police stations used to work earlier, it used to be आप जाइए वहाँ पर, पहले आप जाइए, फिर वहाँ पे आपको SHO मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है, बिकॉज ही इज़ एन ओवरवर्क्ड ऑफिसर हु इज़ नेवर देयर. कभी ना कभी किसी ना किसी लॉ एंड ऑर्डर या बंदोबस्त में लगे रहते हैं. फिर वो FIR लिखेंगे, आप बोलेंगे, वो लिखेंगे, उसके बाद उस पर एक्शन होगा. लेकिन आजकल आप ऑनलाइन कंप्लेंट्स कर सकते हैं, अपने ट्रैक कर सकते हैं आपकी कंप्लेंट्स कहाँ पर हैं, क्या एक्शन हुआ है, अक्यूज्ड अरेस्ट हुआ है कि नहीं, चार्जशीट फाइल हुई है कि नहीं, एंड सो दैट. So on and so forth. Similarly, industry. The way industry processes are there, the industry structures have to be redone, they have to be reformulated, modified, processes have to be modified so that they are more akin to the digital space. And again, this is where the public policy has to take place. The role of the public policy is to provide that platform, provide that environment where the necessary structures are taking place, are put in place, and then processes are there so that people are able to use them in the fastest or the best possible means. अब for example law and order है, policing है, वो government का ही काम है. तो जब तक पुलिस स्टेशंस को कंप्यूटर्स नहीं ले जाएंगे, मॉडर्नाइज नहीं किया जाएगा, तब तक ये काम पब्लिक नहीं कर सकती. इंडस्ट्री भी उसको स्ट्रक्चर को तभी यूज़ कर सकती है जब पब्लिक पॉलिसी उसको असिस्ट करेगी. तो स्किल इंडिया कैंपेन है या ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT है, दैट इज़ वर्किंग फुल टाइम ऑन दीज इश्यूज. And last but not the least, I will end with saying that we have to, as a government, we have to make sure that we encourage innovation and entrepreneurship, because digital space एक ऐसी space है जहाँ पर इनोवेशन से ही काम होता है. सारे जो ओल्ड ट्रेडिशनल एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क्स हैं उसमें बिजनेस करने का तरीका बदल चुका है. इंडस्ट्री जैसे फंक्शन करती है, हमारा लेबर फोर्स जैसे वर्क करता है, वो सब चेंज हो रहा है. और अगर गवर्नमेंट वो प्लेटफॉर्म नहीं प्रोवाइड करती, एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं करती जहाँ पर इनोवेशन, नए नए काम करने के तरीके एनकरेज नहीं किए जाएं, उस इनोवेशन के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल के लिए अगर फंड्स के लिए एक्सेस नहीं है, ट्रेडिंग के मेथड्स चेंज करने के लिए पब्लिक पॉलिसीज़ नहीं बनाई जा रही हैं, तो फिर हम डिजिटल स्पेस में हम लोग पीछे रह जाएंगे. बाकी सारी कंट्रीज़ में इस पर बहुत रिसर्च हो रही है. हम लोग एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवीज़न मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में खोलना चाहते थे, और जब हमने उस पर रिसर्च करनी शुरू की तो आई वाज सो सरप्राइज टू फाइंड आउट कि वर्ल्ड की जो टॉप 5 कंट्रीज़ हैं उसमें चाइना नंबर 1 है. चाइना, US, UK, जर्मनी and excuse me, and Japan. These were the top 5 countries which are working on the artificial intelligence, and China produces 25,000 research papers on artificial intelligence per year. That is the kind of work which is happening in other countries. So if we don't quickly, as a government, if we don't take this public space and we don't formulate public policies, we will be left behind other countries, and then they will come over here and they will take over our employment space. So these are some of the challenges that the digital space presents before us. Definitely it is a very big
big challenge for the government, because government by its own इतनी बड़ी होती है, इतनी उसकी ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस होते हैं और इतना टाइम उसमें लगता है, एक नेचुरल रेजिस्टेंस टू चेंज होता है कि पहले सब ठीक तो चल रहा था, हम देश को इतना आगे ले तो आए अपनी पुरानी पॉलिसीज से, अब क्या बदलना है, इस तरह के डिस्कशंस में इतना टाइम वेस्ट होता है. लेकिन फिर भी गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम लोग जल्दी से पब्लिक पॉलिसीज फॉर्मुलेट करें, एंड लॉट हैज़ ऑलरेडी बीन डन. डेफिनेटली देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्कशन टेकिंग प्लेस, आई एश्योर यू, so that we move forward and take advantage that the digitalization takes place to improve and project the growth trajectory of not only our respective states but also the country, so that we are on top, we remain on top of this of the digital economy and the digital space. With this hope that the Ghaziabad Management Association is already doing its bit. I find it a very progressive association. The ITS and various institutes that are represented here, they are very, very progressive and contributing towards fulfilling this aim of the government and helping us. With that, I'm sure that we will move very fast on that growth trajectory, and I wish you all the very best. Thank you for giving me this opportunity.